Greetings students. So up to now we discussed about the homogeneous mixture solution. What are solution? How they can be identified? And what is the concentration of solution? The types of solution, saturated, unsaturated, solubility. Now we will discuss about the second type of mixture, heterogeneous mixture. The first type of heterogeneous mixture is colloid. So in this module we will discuss about colloids. So we will start with the definition of colloid. So for the definition of colloid, you can write colloid is a type of heterogeneous mixture in which particle size of colloid is intermediate between solution and suspension. So first thing that you have to remember is the difference between all three, solution, colloid एंड सस्पेंशन कि उनके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उनका साइज जो होगा वो डिफरेंशिएट करता है colloid, suspension and solution. The particle size of solution is less than 1 nanometer. Particle size of colloid is from 1 nanometer to 1000 nanometer. Third is suspension. The particle size of suspension particle is more than 1000 nanometer. We will also discuss the comparison between solution, colloid and suspension. So first we will discuss them in detail. So solution is already discussed. Second is colloid. So definition of colloid is a type of heterogeneous mixture in which particle size of colloid is intermediate between solution and suspension, and particle size we have already discussed. Next part is what are the properties of colloids. So about the properties of colloid, first that you can write is colloid appear to be homogeneous but they are actually heterogeneous. So this line can be best understood by taking the example of the most common colloid that we use is the milk. कि मिल्क क्या होता है, दिखने में तो ऐसा लगता है कि वो यूनिफॉर्मली मिक्स हुआ है, कोई भी चीज सेटल डाउन नहीं करते, उसको हम साइड में रख देते हैं, बट स्टिल इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. क्योंकि सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि वन ऑफ द क्राइटेरिया टू डिफरेंशिएट बिटवीन सोल्यूशन एंड colloid, कि सोल्यूशन में से हम क्या करते हैं, सोल्यूशंस आर जनरली ट्रांसपेरेंट, वी आर एबल टू सी थ्रू आउट द water, sugar solution, salt solution, but it is impossible to see through the milk. कि आप एक मिल्क लो, ग्लास के अंदर लो, उसमें से आप सी थ्रू करने की, नॉट दी सील ग्लास. सो जब आप उसमें से क्लियर देखोगे तो आपको क्लियरली दिखाई नहीं देगा. मिल्क अपीयर टू बी ट्रांसलूसेंट, कि वो क्लियर नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मिल्क इज ट्रांसलूसेंट, सो जिसमें से हम क्लियरली देख नहीं सकते हैं. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ colloid, understand these properties by keeping the milk in mind. So appear to be homogeneous but actually they are heterogeneous, non-uniform composition. Second is the most important property, the colloid, the particle size of colloid is from 1 to 1000 nanometer. Third is due to the size of particle. Let us assume we are having a filter paper. I am magnifying it. This is the pore size of filter paper. ये मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं. So when you pass, let us assume this is the filter paper. You are कि अगर आप क्या करो, let take the filter paper, normal filter paper, उसमें से आप मिल्क को पास करो, कुछ भी आपको फिल्टर पेपर के ऊपर दिखाई नहीं देगा. Means particles of colloid can pass through the filter paper. If someone asks you why solution particle can pass through the filter paper, colloid particle can also pass through the filter paper. The reason is again the particle size, क्योंकि जो filter paper होता है तो pore size of filter paper is not that, so it can trap the particle of colloid, कि इतना बड़ा होता है कि उसमें से colloid के पार्टिकल छोटे होते हैं, वो क्रॉस कर जाते हैं. तो उसको अगर हमको रोकना है तो हमको एक स्पेशल तरह का फिल्टर पेपर लेना पड़ेगा जिसमें पोर साइज कम होना चाहिए और वो colloid के पार्टिकल को क्या कर ले, इट कैन ट्रैप द colloid particles. नेक्स्ट इज
particles of colloids are too small to be seen with the normal microscope, कि normal microscope से हमको वो क्या होंगे, नहीं दिखाई देंगे. Next is colloids are stable. So the most important difference between the colloid and suspension. Keep in mind example of suspension. सैंड इन वाटर, कि सैंड है वो पानी में हमने मिक्स किया अच्छे से, आपको पता है इट विल नॉट बी इन द डिसॉल्व स्टेट. जैसे हम उसको रखेंगे तो पार्टिकल ऑफ सैंड विल settle down after some interval of time, but this does not happen in case of colloid. The particle of colloid does not settle down, कि ये नहीं है कि आप दूध को आप थोड़ी देर के लिए रख दोगे तो जो उसके अंदर जितना भी फैट, विटामिन and all those substances they will settle down. This will not happen in case of colloid. So that is why colloids are stable, means particle do not separate on keeping the colloid undisturbed, कि उसको आप ऐसे ही रख दोगे, कुछ नहीं करोगे उसके साथ, तो वो ये नहीं है कि भाई पार्टिकल जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगे. बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ सस्पेंशन. एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन, सैंड इन वाटर. आप उसको मिक्स करो, कितनी भी कोशिश करो, इट विल नॉट बी इन डिसॉल्व स्टेट. आफ्टर कीपिंग इट फॉर अनडिस्टर्ब स्टेट फॉर सम इंटरवल ऑफ टाइम, साइड में रख दोगे तो पार्टिकल ऑफ सैंड विल सेटल डाउन, वो बैठ जाएंगे. So this is the biggest difference between colloid and suspension. Next is the most important property by which we can differentiate solution and colloid. कि solution और colloid दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन हम दोनों को differentiate कैसे करेंगे? They can be differentiated by the sixth property which is called Tyndall effect. So what is the meaning of Tyndall effect? Tyndall is the name of scientist who explained the phenomena of scattering of light due to the size of particle. So how it can be understood? Let's take an example. We have a beaker और टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर हमने क्या फिल कर दिया, वाटर. अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से कोई भी टॉर्च वगैरह या लेजर लाइट वाली जो होता है वो हम यूज कर रहे हैं. वी आर अलाउइंग द लाइट टू पास थ्रू दिस कंटेनर और वेसल. द पाथ ऑफ लाइट विल नॉट बी विजिबल हेयर इन द सर्कल पोर्शन. कि जब आप वाटर लेते हो बीकर के अंदर, उसमें से लाइट पास करोगे, इफ इट इज बेटर इफ इट इज परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन द डार्क रूम. डार्क रूम में करोगे तो क्लियरली विजिबल होगा. लाइट हम इसमें से पास करेंगे, ड्यू टू द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ वाटर, वो इतने छोटे होते हैं कि इट कैन नॉट इंटरप्ट द पाथ ऑफ लाइट, तो वो सीधा जाएगा और आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा. लेट्स टेक द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन. कि हमने क्या लिया, पानी लिया, उसमें हमने क्या डिसॉल्व कर दिया, सॉल्ट. व्हेन यू पास द लाइट थ्रू दिस सोल्यूशन, टिल द कलर और द लाइट पाथ विल नॉट बी विजिबल इन दिस सोल्यूशन. द रीजन इज सेम, क्योंकि पार्टिकल का साइज है वो डिसाइड कर रहा है. क्योंकि ये लाइट आएगी, अगर पार्टिकल का साइज छोटा है, इट कैन क्रॉस थ्रू दैट पार्टिकल विदाउट एनी इंटरप्शन. कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं, वैसे का वैसे चला जाएगा. मान लो पार्टिकल का साइज बड़ा है, तो फिर उसको स्ट्राइक करेगा और अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा. सो दिस चेंज इन डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द पार्टिकल साइज. नाउ दिस फर्स्ट एग्जांपल इज ऑफ ओनली सॉल्वेंट वाटर. देयर वाज नो स्कैटरिंग, क्योंकि लाइट का पाथ आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा बीकर के अंदर. सेकेंड इज सॉल्ट सोल्यूशन, स्टिल द सेम. लाइट हम पास करेंगे विद द हेल्प ऑफ टॉर्च और लेजर लाइट, द पाथ ऑफ लाइट स्टिल विल नॉट बी विजिबल. नेक्स्ट टेक द एग्जांपल, टेक ए बीकर, एड फ्यू स्पून्स ऑफ मिल्क. थोड़ा सा दूध डाल दो आप इसके अंदर, की सोल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा व्हाइट हो जाएगा. व्हेन यू पास द लाइट थ्रू दैट बीकर, द पाथ ऑफ लाइट विल बी क्लियरली विजिबल टू यू. अगर आप सामने से देखोगे, साइड में से देखोगे, तो ये वाला पाथ जो है आपको विजिबल होगा. रीजन क्या है, क्योंकि जैसे ही लाइट अंदर जाएगी, पार्टिकल का साइज बड़ा है, स्ट्राइक करेगी और दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी. सो द पाथ ऑफ लाइट विल बी विजिबल जब आप साइड में से उसको देखोगे. So this is the one of the most important property by which we can differentiate colloid from the solution. So in 1 mark question, how we can differentiate solution from colloid? The answer is by the Tyndall effect. For 1 mark, the answer is sufficient for the Tyndall effect. For 2 or 3 marks, you have to write this activity, how we can differentiate solution from colloid. So this is what all about the colloid. What are their property, what is their definition, and the example,
Next part of the colloid is classification of colloids. So how we can classify the colloid? So during the solution topic, we discussed कि in solution generally solution is a mixture of minimum two components. One is called solute, other one is called solvent. तो सबसे सिंपल डिस्क्रिप्शन हमने सबसे सिंपल क्या किया था? Solute is that substance which is less in amount. Solvent is that component which is more in amount or quantity. कि जो कम होता है वो solute है, which is more in amount, that will be solvent. For example, sugar solution. In sugar solution, sugar is solute and water is solvent. In case of colloid, why solute and solvent term is not used? Because it is not uniform mixture. Colloid is not uniform mixture that is dispersed in a particular solvent. So in place of solute we write dispersed phase, in place of solvent we write dispersion medium. कि जो हमारा सब्सटेंस है वो दूसरे के अंदर क्या हुआ है, अच्छी तरह से डिसोल्व नहीं हुआ, उसके अंदर वो क्या है, बिखरा हुआ है, फैला हुआ है, डिस्पर्स हुआ है. सो जो डिस्पर्स हुआ है और जो सोल्यूट है, जैसे सॉल्यूशन में सोल्यूट होता है, यहाँ पे हम सोल्यूट को क्या बुलाते हैं, डिस्पर्स फेज. एंड द सॉल्वेंट इन केस ऑफ सॉल्यूशन, dispersion medium in case of colloids. So there are different types of colloid based upon, if someone asks you on which basis they are classified, this classification is based upon their physical state, the physical state of dispersed phase and dispersion medium. As you can see the first example, if dispersed phase is solid and dispersion medium is liquid, in that case colloid is specifically named as sols. कि अगर dispersion medium liquid है और dispersed phase solid है तो उससे जो colloid बनेगा उसका specific name क्या है, sols. The simplest example of those sols is ink and soap solution. कि ink को आप डालोगे, ink के अंदर जनरली क्या होता है, आपका एक solid color होता है, उसको हम किसी solvent के अंदर dissolve कर देते हैं. Second is if dispersed phase is still the solid, dispersion medium is also solid, they are called solid sols. The simplest example of those is colored gemstones, कि जो हम रिंग वगैरह के अंदर कुछ अलग अलग कलर के gemstones डालते हैं. One of the example of those gemstone is ruby. रूबी इज डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्ड रूबीज आर देयर, कि उनके अंदर क्या रहता है कि सॉलिड होता है, दूसरा सॉलिड उसमें मिक्स हो जाता है, ड्यू टू दी वन ऑफ द सॉलिड कलर इज देयर. सो बोथ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम आर सॉलिड, दे आर कॉल्ड सॉलिड सोल्स, and the example of solid sol is ruby. You can find more example in your book. Next is if the dispersed phase is solid and dispersion medium is gas, they are specifically called aerosols. The simplest example of aerosol is smoke. When we burn the fossil fuel, coal, petrol, there is lot of black smoke, काला धुआं निकलता है, तो उसके अंदर वो क्या होते हैं, डस्ट के पार्टिकल या कोल के पार्टिकल होते हैं, दे आर इन सॉलिड स्टेट एंड द एयर इज बिहेविंग लाइक ए डिस्पर्जन मीडियम. तो इसलिए हमको क्या दिखाई देता है, वो ब्लैक धुआं जो दिखाई देता है, ब्लैक स्मोक, दैट स्पेसिफिकली इज कॉल्ड colloid and they are specifically called aerosols. Similarly, liquid in gas, they are also called aerosols, and you are most familiar with this example in winter, that is the fog. What is fog? The liquid droplets present in the air during the winter season. Why? During winter season there is decrease in temperature, तो जो water vapor atmosphere के अंदर present होते हैं, they become condensed, वो ठंडे हो जाते हैं and वो किस में आ जाते हैं, in the colloidal particle range 1 to 1000 nanometer, and the liquid droplets are dispersed phase and the air is dispersion medium. So this is the simplest example of aerosol, liquid in gas. Next example is when both dispersed phase and dispersion medium both are liquids. Liquid. The simplest example is emulsion. So there are number of examples of emulsion, both are liquid. For example, milk. Milk is an example of oil in water. Oil, why I am using oil? Because the fat content of the milk is oily in nature and the maximum second component is water. तो वो अच्छी तरह से mix हुए होते हैं and that is why they are specifically called emulsion. Butter is also an example of emulsion. The cold cream that you apply, or cold cream some people use, that cold cream is also an example of emulsion. Means they are all under the category of colloids.
So liquid specifically called emulsion. Example, milk, butter, cold cream, vanishing cream, bleaching cream. They are all examples of colloids and specifically emulsion. Next is gas in liquid. Dispersed phase is gas, dispersion medium is liquid. They are called foam. The simplest example of foam is shaving cream, and one more example that you can write is the leather which is produced during washing of hand. कि आप soap solution से अपने hand को wash कर रहे हो तो जो foam produce होती है, it is actually an example of gas in liquid. So the leather produced by the soap solution. Second is the shaving cream. Next is dispersed phase is gas and dispersion medium is solid. So gas in solid, they are called solid form, and the example is bread. So these are the few of the examples. So in exams the question can be under two categories. How to learn this? Or whenever these types of tables are there in your book, on your notebook, always try to learn in the opposite manner. Generally what we do, we learn solid, liquid, and example it is called sol, and it is the example of sols are ink. But in exams, generally the question in the reverse manner. They will give you the example, smoke. Smoke is a type of, which type of? Smoke is which type of colloid? So smoke is a type of aerosol. This is sufficient for the 1 mark. For 2 marks, you also have to mention, in case of smoke, smoke is a type of colloid which is specifically called aerosol, and dispersed phase in the smoke is solid and dispersion medium is gas. This is for the 2 mark portion. So always try to learn in the opposite manner. तो उधर से आप learn करोगे तो ज़्यादा better रहेगा, कि maximum time to confuse you. The question will come like, ruby is a type of which type of colloid? So ruby is which type of colloid? So ruby is a solid sol in which both dispersed phase and dispersion medium is solid. Similarly, milk, name the type of colloid. Milk is emulsion. Why? Because if someone asks you why milk is under the category of emulsion, then you have to write, because in case of milk, both dispersed phase and dispersion medium are liquid. That is why they come under the category of emulsion. Similarly, the shaving foam. Why? Because dispersed phase and dispersion medium both are liquid. So this is what all about the colloids. So what is the first we discuss the definition. It is a heterogeneous mixture which contain two types of medium, dispersed phase and dispersion medium. Here whenever I am discussing about the particle size, so particle size is of the dispersed phase. कि जहाँ पे भी हम particle size की बात कर रहे हैं तो particle size दूसरे का नहीं है, particle size किसका है? Dispersed phase. Similar in case of solution, particle size was of solute. So particle size is in between solution and suspension, and the particle size is from 1 to 1000 nanometer. In few of the books you will find 1 to 100 nanometer. That is incorrect. So the particle size is from 1 to 1000 nanometer. Next is the properties. Colloids are heterogeneous. Particle size, they are not visible with the microscope. They can pass through filter paper. They do not settle down upon keeping as such. Next is the most important properties. Colloids show Tyndall effect, and on the basis of this property we can differentiate colloids from the solution. Next was the classification: sols, solid sols, aerosols, emulsion, foam, solid foam. These are the specific names, but they are collectively called colloids. Why? Because of the particle size. The particle size is in between from 1 to 1000 nanometer. So I hope everything is clear about colloid to everyone. If you have any doubt, you can write in the comment section. So thank you, students.